So after 5 long months, Sahil here with another new video. Welcome back to the channel guys. आज हम बनाएंगे रोबोट जिसका मैकेनिज्म मैंने खुद डिज़ाइन किया है और आप भी इसे इजीली घर पर बना सकते हैं. So let's make it. यहाँ पर हमें इस तरह के 2 गियर बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ने वाली है. लेट मी टेल यू हाउ डज इट वर्क. क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हमने 28 टूथ्स वाला क्राउन गियर यूज़ किया है और उसके साथ में हमने 10 टीथ्स वाला दूसरा गियर यूज़ किया है. इसलिए जब भी हम एक्सेल घुमाएंगे तो क्रैंक शाफ्ट 10% लो स्पीड से घूमेगी बट उसका टॉर्क 10% ज़्यादा होगा, जिससे हमारा रोबोट अनइवन सरफेसेस पर भी काफ़ी आसानी से चल सकेगा. इन दोनों गियर बॉक्सेस को फिक्स करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मेजरमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है.
Hey Marcon, check the system. System checked. Oh, that's great. Now start the engine. Sorry, I can't. Why? So, I think you forget something. Oh, sorry. Let's go, Marcon. Woohoo! Before you leave, like this video, share this video with your friends and family. Do subscribe to my channel and turn on the notification. जल्दी मिलता हूँ एक और नए प्रोजेक्ट के साथ. Till then, be creative. See you soon in the next video.